जैसे कि अभी आप वॉच लॉन्च पे आए हैं तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके लाइफ का सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहा है? सबसे अच्छा टाइम दो मैं बोलना चाहूँगा। एक 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद जब हम इंडिया आए थे तो हम लोग मेरीन ड्राइव, जो हमारा ओपन बस का जो ट्रिप था, उसमें हम लोग मेरीन ड्राइव पे खड़े थे और आगे पीछे दोनों तरफ इवन साइड्स में वो पूरा जैम पैक था, लोग गाड़ियों से बाहर आए हुए थे। एंड जिस तरीके का स्माइल था सबके फेस में, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कौन कितने लोग होंगे उस भीड़ में जो अपना प्लेन मिस कर रहे हो, फ्लाइट मिस किए होंगे, किनको कहीं इंपॉर्टेंट ऑफिस में जगह में जाना होगा, बट द काइंड ऑफ रिसेप्शन वी गॉट, और पूरी मेरीन ड्राइव एक तरफ से दूसरे तरफ तक जैम पैक भरी हुई थी। और दूसरा इंस्टेंस आई वुड से 2011 वर्ल्ड कप जो फाइनल्स था, उसमें जब 15-20 रन बचे हुए थे तो जिस तरीके से वानखेड़े स्टेडियम में सारे दर्शक वंदे मातरम चैंट करना उन्होंने स्टार्ट किया था। सो ये दो ऐसी मोमेंट्स थे, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा उनको रेप्लिकेट करना। दोज आर द टू मोमेंट्स दैट आर वेरी क्लोज टू माई। I think it couldn't have been better in the sense, you know, if you're playing the last game of the league stage, and if you get an easy win, you don't get a lot out of that game. What was good was the spinners were put under pressure, and also we lost quick wickets initially, and that actually put our middle and lower middle order under pressure. So we gained a lot out of it. Winning, of course, was very important, but the knock by Raina was very crucial, coming at number 5. More often than not, you don't get an opportunity. You get into bat maybe after the 38th, 39th over, if your top order is batting well, and you have to slog it out. So you play the big shot, you get out, don't score too many runs. And at the end of the day, when you get into the knockout stages, you want to have runs under your belt. It doesn't really matter how many runs, but once you get going, it just gives you that good feeling, which I feel is important in the knockout stages. So overall, that's one of the main reason why I would say it was a good game for us. And all the batsmen also, they were under pressure. It was doing a bit and started to stop a bit also. And their bowlers, I felt they exploited it. They were bowling slow, they were using the slower deliveries really well. So overall, a good game. No, I was not planning to hit in